बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट्स के अंदर जो वर्ब्स की फॉर्म चेंज होती हैं। लेट्स सपोज वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट, वर्ब सेकंड फॉर्म इन पास्ट एंड वर्ब थर्ड फॉर्म इन पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ सैम्पल्स वर्ड्स भी मैंने लिखे हुए हैं, तो इनको फॉलो करेंगे। ये जो रेड कलर में लिखे हुए हैं ये सारे वर्ब्स हैं। वर्ब एक्चुअली एक वो चीज़ होती है जिसके लास्ट में हम ईडी आईएनजी लगा सकते हैं कि नॉर्मल सी पहचान है, इजी वे आपको बता रहा हूँ कि वो वर्ब होता है। अभी आप देखें आई लूज़, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, आई लूज़ एज इट इज़ लिख दूँगा इसको मैं, ठीक है। उसके बाद देखें आई लूज़ वर्ब सेकंड फॉर्म में भी ये आ गया। अभी पास्ट परफेक्ट में इसको मैं क्या लिखूँगा, आई हैड लॉस्ट, आई राइड, आई रोड, आई हैड ridden. I drink in present first form. In past, we will use I drunk. ठीक है, I drank. And third form, I had drunk. Past perfect में हमेशा had यूज करेंगे, ठीक है। I go, I went. Second form, go की second form went. And third form, I had gone. ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म एंड गॉन थर्ड फॉर्म को होगी। आई बर्न सेकंड फॉर्म, आई बर्नड एंड थर्ड फॉर्म, आई हैड burned. I choose in second form, SHOSE I choose, and in third form I had chosen. I built second form, I built, ठीक है। And in past perfect I had built. I drive, I drove, and in past perfect I had driven. In present we will use I get. In past form we will use its second form, so I got. And in third form I had got. पास्ट परफेक्ट में हमने हैड लगाना, ठीक है। इन प्रेजेंट आई फ्रीज, इन पास्ट आई फ्रोज, एंड इन पास्ट परफेक्ट आई हैड फ्रोजन। आई फोरटेल, इन पास्ट आई फोरटोल्ड, एंड इन पास्ट परफेक्ट आई हैड foretold. Okay. In present I mean, in past I meant, and in past perfect I had meant. I beat in present form, in past we use I beast, verb second form, in verb third form I had beaten. Okay. I oversleep, in past verb second form we will use I overslept.
and in past perfect, I had overslept. राइट? तो ये थी कुछ प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट्स के दरमियान वर्ब की वेरिएशंस के वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज होते हैं, पास्ट में सेकंड फॉर्म एंड पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म विद यूजिंग हेड, ठीक है, जिसमें हेड भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह मैं मज़ीद इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू क्लास में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। तो जुड़ी रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।